मैं मारंग बलोच इस वक्त ग्वादर से बात कर रही हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि 28 जुलाई राजी मुच्छी का दिन था, जिस दिन हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। 3 दिन के दौरान हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। 4 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे FC पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारिंदे हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। तकरीबन ग्वादर धरने में अभी दूसरी मर्तबा हमें क्रैकडाउन का सामना हुआ है, जिसकी वजह से FC और पुलिस ने आकर जो पीसफुल धरना था उसके साथ मुज़ाकरात करने के बजाय वहाँ जितने भी मुंतज़मीन थे उन सबको मारा, उन सब पर तशद्दुद किया और अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। पूरा शहर बंद है कि उनमें से कितने लोग जिंदा हैं और कितने लोग जख्मी हैं। ये सब रियासत पाकिस्तान की जानिब से हो रही है। मैं आप सब से यही गुजारिश करती हूँ कि आप सब लोग इस जब्र और इस नस्ल कुशी के खिलाफ आएं और बलोच तहरीक और बलोच यकजहती कमेटी का साथ दें। और इस दरमियान अगर बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, जिसके ऑर्डर्स पर पीसफुल मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। पीसफुल मुजाहिरीन आज भी जिनकी लाशें GD हॉस्पिटल और मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़ी हुई है, जिन लाशों को देखने के लिए भी हमें इजाजत नहीं दी जा रही है और कल को मुझ समेत यहाँ पर किसी को भी कोई जानी नुकसान पहुंचता है उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की होती है। शुक्रिया। On June 27th, Zaheer Ahmed Baloch, the father of 2 sons, and the sole provider of his family who has no political affiliations, was forcibly abducted by Pak Army. This incident triggered the Baloch people's resistance, and started the peaceful protest against the Pakistan government and army, and demanded for the end of forced disappearances and brutality against Baloch people. Dr. Mahrang Baloch, who leads the Baloch Yakjehti Committee, BYC, who also led the recent Baloch Raji Machi protests, which were met with violence by security forces, mass arrests and firing on the protester, which resulted in 3 deaths and several injured. We saw the same act in December last year 2023 at the Baloch Long March. We see it now again with the Baloch Raji Machi protests. It is clearly a punitive attempt by the Pakistani authorities to deter, vilify and criminalize peaceful protesters. Pakistani media manages to avoid the coverage of the protesters, as well as the communication services that were shut down by the authorities. This has led to more struggle and tense for the protesters and the victims of the families to voice up. Nevertheless, the outcry remains still in the core of Baloch Raji Machi protest. Mahrang has renewed her appeal to the media and international human rights organizations to speak up against the state's violence, and also expresses concern for the Baloch missing persons and harassment of Baloch protests by authorities. The Muslim Ummah is silenced, and has shown zero sympathy or concern for the Baloch people. Will Baloch's voice be ever heard? This is the question which is also in the eyes of protesters.